हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही फेमस केस लॉ के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि केस को और अच्छे से हम समझ सके। एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल्स पूरे करने पड़ते हैं। अभी तक अगर आपके मुंह से सेक्शन 10 नहीं निकला ना, तो दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जो बात करता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो पे, आप उसको जाके देख सकते हो अगर आपको सेक्शन 10 को बहुत अच्छे से समझना है तो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगी। सेक्शन 10 में बेसिकली 8 एलिमेंट्स होते हैं। आइए क्विकली एलिमेंट्स देख लेते हैं एक बार। पहला होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर आता है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न, और अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बोलना है तो पैसे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हमें चेक करना होता है, तब जाके कंसेंट फ्री मानी जाती है। जैसे कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फ्री कंसेंट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट्स के जो टर्म्स होते हैं वो सर्टेन होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। मतलब आप कुछ ऐसा ना लिखो जो कि अनक्लियर हो किसी को, तो एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट है हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। मतलब आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हो जो कि परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। अगर ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और अगर एक भी कंडीशन इसमें मिस हो जाती है या गलत परफॉर्म हो जाती है तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और उसे हम लीगली फोर्स नहीं करवा पाएंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। आज हमारा केस जो है वो सेकंड कंडीशन पे बेस्ड है, जो कि है लीगल इंटेंशन। तो आज हम इस पे फोकस करेंगे कि लीगल इंटेंशन क्या है एंड क्या नहीं है, राइट। दोस्तों लीगल इंटेंशन का मतलब होता है कि अगर आप एक एग्रीमेंट बनाते हो तो आप जो है उसे सिर्फ कैजुअली नहीं बना रहे हो। मतलब आपने उसे इस इंटेंशन से बनाया है कि कल को अगर कोई सामने वाली पार्टी ने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो मैं उससे स्यू कर सकूं और कंपनसेशन ले सकूं उससे, अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है उसके ना परफॉर्म करने से। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आप अपने क्रश को डेट पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही आपकी, और बहुत दिन बाद आपने फाइनली हिम्मत करते हुए उसे ऑफर करा कि वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी टुनाइट। और आपकी क्रश ने ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बोला यस श्योर। और आपने अच्छे से एक 5 स्टार होटल में एक टेबल बुक कर ली और आप अपना वहां पे पहुंच गए होटल एंड वेट करने लगी कि कब क्रश आएगी। बट क्रश तो आई नहीं एंड आपने काफी कॉल्स भी किए बट उसने कोई कॉल का आंसर नहीं दिया एंड आपकी जो 5 स्टार की बुकिंग थी वो बेकार चली गई और आपको काफी ज्यादा लॉस हो गया। इस बात पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और आपने केस कर दिया अपनी क्रश पे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तुमने मुझे हाँ बोला था कि तुम आओगी, इसलिए मैंने 5 स्टार होटल पे एक टेबल बुक कर दी, लेकिन तुम तो आई नहीं और मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गए। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट लड़की को कंपनसेशन देने बोलेगी कि नहीं? अगर ऐसा होने लगा ना तो ना जाने कितने केसेस फाइल होने लगेंगे कोर्ट में, और कोर्ट को मर्डरर्स को पनिश करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर अगला बंदा जो है वो छोटी छोटी बात के लिए कोर्ट पहुंच जाएगा, है ना। इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट को तभी लीगली इन्फोर्स किया जाता है जब वो बनाया जाता है किसी लीगल इंटेंशन से, ना कि कोई कैजुअल प्रॉमिस से।
अब केस देखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए, और ये एग्जाम्पल के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये केस कभी भूलोगे। भूलोगे क्या? नहीं ना? Hi dear, you are already packing. Yes, finally your leaves are coming. And we can go back to England. I am already feeling so excited to leave Ceylon. Yes, I can see that. Good. Good, continue your packing. You continue your packing. I am going out for some work. Okay. Sir, what happened to my wife? She is all right, right? Mr. Balfour, your wife has developed rheumatoid arthritis. It is a long-term autoimmune disorder that primarily affects joints. But doctor, we came England on leaves and it is over now. Can we go back to Ceylon and get her treated there? Mr. Balfour, my advice would be that your wife should stay in England, because the climate in Ceylon would be detrimental to her health. Rest, the decision is yours to take. Okay doctor, give me 5 minutes, I will talk with my wife. Sure. Take your time. What did the doctor say? There is no issue, right? I already told you. Dear, the doctor said you are having arthritis. What? I mean how? My hands are okay, dear. I am all right. No, it isn't. I don't know that my hand is paining because of such a serious problem. How could I have arthritis? I can't understand it. It's not your fault. Anybody could have it. But your leaves are about to end. I know, but the doctor has strictly advised you to stay in England, because the climate in Ceylon would be detrimental to your health, dear. But, how can I stay here alone? Don't worry about it. I promise you that I will pay £30 every month until you come back to Ceylon. Okay, then I will stay here. You go and continue your work, dear. Now, let's go and do your admission procedure. Okay. Why are you always calling me? I have work to do. You are so busy with your work that you have stopped calling your sick wife. Can you at least not get angry when I am calling you? You have also stopped sending me monthly payments that you promised me before leaving. Actually, you know what? Let's get separated. I can't leave like this. I am done with you. I didn't know that you will change like this after going back. Fine, if this is what you want, let's get divorced. Pay me what you promised, and also the alimony. I don't owe you anything. I promised to pay you because you were my wife. And since we are getting separated, why should I pay for your expenses? We had a contract that you will pay me €30 every month until I return back to Ceylon. What contract? Are you mad? You promised me before going, right? Now you cannot go back with your words. Otherwise, I will have to take the legal action against you for breaching the contract. There is no sort of contract between us. Do whatever you want to. You even cut my call. Okay, if that's what you want, I will sue you. Sir, I and my husband came to England on my husband's leave. However, I got sick here and stayed back in England. Before my husband went back to Ceylon, we entered in a domestic agreement, wherein he agreed to pay me £30 until I return back to Ceylon. Sir, the agreement made between us was purely domestic in nature. It does not hold any legal enforcement. Moreover, I never had any sort of intention to form an agreement which is legal in nature. And thus, I am not liable to pay any amount to my wife. Sir, my husband is liable to pay me maintenance, as he himself made an agreement with me that he will pay £30 every month. But few months later, he stopped sending me payments, and therefore, breached the agreement. I humbly pray to this court to give me my allowance which are due. When a husband and a wife enter into an agreement, they never intend to create a legal relationship. Both the parties must have an intention to create a legal relationship while entering into an agreement, then only it becomes enforceable in court of law. The ordinary example is where two parties agree to take a walk together,
or where there is an offer and an acceptance of hospitality. Nobody would suggest in ordinary circumstances that those agreements result in what we know as a contract, and one of the most usual forms of agreement which does not constitute a contract appears to me to be the arrangements which are made between husband and wife. All I can say is that the small courts of this country would have to be multiplied 100-fold if these arrangements were held to result in legal obligations. They are not sued upon, not because the parties are reluctant to enforce their legal rights when the agreement is broken, but because the parties, in the inception of the arrangement, never intended that they should be sued upon. Agreements such as these are outside the realm of contracts altogether. The only question in this case is whether or not this promise was of such a class or not. For the reasons given by my brethren, it appears to me to be plainly established that the promise here was not intended by either party to be attended by legal consequences. That was so because it was a domestic agreement between husband and wife, and it meant the onus of proof was on the plaintiff, Mrs. Balfour. She did not rebut the presumption, and thus the case is dismissed. आई गेस अब आपको ये केस अच्छे से क्लियर हो गया है एंड रीजनिंग भी समझ आ गई है कि क्यों कोर्ट ने इस केस को अलाउ नहीं करा, ताकि एक गलत प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए और लोग नॉर्मल प्रॉमिस जो कि उन्होंने बिना सोचे समझे कर दिया उसे कोर्ट में इन्फोर्स कराने ना आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।